morning to all of you. Namaskar. Sat Sri Akal. Vanakkam. All whatever words I do that. Greetings to all of you. For the Master Honorable Dr. Brown Sahab, Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor of OEOG, and Dr. Swain, Director of Research, S.K. Swain ji, and all Swain Sahab is here also. And my friends, old friend Dr. Kanchan Kumar Singh, I many times say that he is my guide since I was a ADG, Processor in Council. And Dr. Mehta, Director of CIA Bhopal. Dr. Das, my good friend, old friends. Dr. Pannalal, I personally feel that he is the person who rescued me many times when I need urgently any information, even 10 o'clock, 11 o'clock at night or early in the morning. So he can be told as a backbone of the assembly at the present stage. My old friends, I see many, I cannot take name of everyone. Because personally I feel these kind of organizations of innovation and these things actually kill the time. We should directly come to the business on the work. Because time is very important. Time, we are given time, I think half an hour, something like that. I will not take much time, but I directly go to the work which I personally want. Friends, now I am becoming impatient because now I have started counting my days reversely. Only 1 year and 1.5 years I have to show my own output. And my output depends on output of new people's. So what actually I want that everyone should do the job, Bala ka job jo karte hain. Of agriculture in whole country, and each and every farmers and mechanics, repair, maintenance person should know what agricultural engineers are. But somehow, not satisfactorily, we are successful. I am not successful. You people are maybe doing your best, but something we have to think of. Because many times we think that in agricultural universities or ICR, engineering are suppressed. People think that. People think that personally, but I think that no one is suppressing anyone. It is you which may be the cause of that. Many times people think that किसी चीज को जमीन में गाड़ दो. I think many of you, 99% understand the Hindi. I am more conversant, mother tongue. Mother tongue ज़्यादा आसान होता है बोलना. So many times people think that इसको तो गाड़ दिया मिट्टी में मर गया. But you should think that you are the seed. If someone put into, sometimes, not always, sometimes soil has put on you, you should come a very good green plant of that. And that depends upon you. And I personally feel that our engineering scientists are having probably lack of confidence, one, and another lack of fears. Lack of fears of being, lack of fear of research, director research, lack of fear of vice chancellor. Many, whoever comes into the channel. Another lack of confidence in your own technology. Many times you might have heard people telling that civil engineer does not cross the bridge which has been designed by the same people, because they many times feel afraid that कहीं bridge गिर ना जाए जो मैंने बनाया. तो ये confidence आप में कम है. मैं गेज करता हूँ और सब में होता है, हम में भी होता है, सब में होता है. But I request you all by folded hand to come out for this. No one is going to shoot you if you are going to demonstrate your machine in the villages and it fails. दो चार गाली देगा, बात करेगा, इतना ही होगा. But you should be thick enough of that testing of your machine technology, whether it is food, whether it is fiber, whether it is farm machinery,
or harvesting machinery, any machinery. But they will teach you what actually made that machine or technology fail. And next time again, correct it and go. And by 2-3 times, going and coming, you will be known in that village. They will give you the tea, coffee, juice, and your machine will also work. I will tell you, and you will be the happiest person there if you are doing that. In front of channels, official channels, if you are right, you speak your mind to your honorable vice chancellor, your director of research, your dean, whoever in the channels. At least you should speak your mind, that what is the correct things. It is up to the chair, they have many other priorities, they will decide. But many times I feel that our people are not speaking. Either he or she is shy, or he or she is afraid of, मैं बोलूँगा तो साथ कुछ हमारा शियार खराब कर देंगे या कुछ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये होता है कि आप बोलोगे भी सही, if you speak right, even then things not happen because the person who are at the top, for them there are many priorities, and he or she has to see that priority according to the requirement of the university, requirement of the councils, requirement of the country. Even the PMO, we said, ICRP said many things to PMO, but PMO decides what Prime Minister thinks on priority in the country. So for that, you should not get demotivated, itna baar bola kuch nahi hua, but think that you have spoken 20 times, nothing happened, but there is a probability if you spoke 21st time. So go on speaking, go on trying. That is my advice, and that is, you can say, the things requirement for uplifting. जो आप लोगों में फीलिंग है, हम जो इंजीनियरिंग को दबा रहा है सब जगह, वो दबाना कम हो जाएगा, आपका फीलिंग दूर हो जाएगा. No one is suppressing anyone, everyone has to show his or her own potentials. And once his or her own potential is shown, then naturally people will give you the chance to prove. And once you are proven, then you are at the top of it. Now come to the subject. I have learned the subject during 1 year as a DDG, little bit more about pharmacy, which I had been taught in BJP. And what actually country needs, many of our friends, Dr. Kanchan Kumar Singh, Dr. Panala Singh have already told, I will not repeat all those things, but which I am repeating since again and again, and the last time that Dr. Panala Singh told that this was the unique things, that Parliament Standing Committee on Agriculture only was called for mechanization. And people were thinking council ने जहाँ साहब ने कुछ कराया है, इसीलिए अलग से इसका क्यों कमेटी का मीटिंग होगा? And it happens twice in a month. Twice, though it was very difficult for us to acquire all the information, data, but there's something transpired in that meeting. Where PG Saab was also very new, just a few days back he had joined. And he is very positive person. He had to give the presentation. We were just to support him in that meeting. And very nicely went, but one important thing came out. Final report I have not received, but it will be coming, the recommendation, that not only each and every district, each and every block has to be done at least one agriculture region, but the Parliament Committee on Agriculture wants that each and every village should have 1 or 2 agricultural engineers in FPOs and many other places. Otherwise, the mechanization will not sustain. Another important thing during the meeting I came to know through the Department of Agriculture and Farmers Welfare, third party evaluation of mechanization, a scheme of Government of India that says that minimum 20% productivity increases just by mechanization. Around 20%, 30%, 38% water use efficiency increases because of the, if you use the drip irrigation and some kind of irrigation methods. Input utilization efficiency increases around 14 to 15% because of the mechanization. I was surprised to know
that the seed germination, well, if everything is constant, then because of the seed drill and other mechanization, equipment, machinery, around 20% germination rate is more. Then I asked the agency who had a study, because I was not quoting any kind of data. All these data is government data, not our data. You are not involved. Many times people may say that ये तो इनका अपना ही है, इन्होंने बढ़ा चढ़ा के दिया है. सो नहीं है. कोई थर्ड पार्टी ने किसी थर्ड पार्टी के लिए evaluation report government of India किया. Those reports say there. I personally also feel that I have told to council also many times. You may be knowing many of you that मुझे डर नहीं लगता. मुझे तो जो मन में होता है मैं बोलता हूँ. ठीक है? तो yesterday also some issues came and I said to Honorable DG and all the DG were there that should ICR stop for few years and so maybe the applicable for the university giving much more emphasis on seed, breeding and all those things. I personally feel that if only the agronomical practices and mechanization is implemented in the whole country by giving all the funds, even then we can increase 20-30% production and productivity, keeping everything constant. No much resources are required. Only importance and giving. Only good agronomical practice, I mean, not agricultural, good agronomical practice, and all the machinery wherever are available, that should be employed and that should be provided to the farmers to different channels or establishing the channels. And another thing that if you stop the loss, which is up to recent data say around 50%, on an average maximum, loss can be reduced so that 15% become more than 70 million ton of the food. उसमें से यदि हम 50% ही बढ़ाने 30 million ton is saved. Why need to cultivation? Why you should give more and more stress to the natural resources, that is soil, water, environment, all those things. But friends, it is very difficult. And I request Honorable Vice Chancellor to try at the university level, at least in Odisha. And I am very happy that Odisha is having probably the Directorate of Agriculture separately. Give them the job to imply agriculture at least block level, panchayat level, so that whatever machinery and whatever things are there, people should not go much away to their repair and maintenance. And many times, one day there was a farmers fair in IAR. 3-4 persons from Bihar came to my chamber, said, I have bought this, I have bought that, but I don't know how to attach them, how to mount those things to the tractors. So kindly provide me. I was having no answer. I told you go today only to Gopal. I just called to Director Gopal. Say, Gopal, they have training, free of cost. But that is not the solution. Person, agriculture engineer should be available near to him or her. Then only they can utilize, otherwise they will buy, they will keep somewhere and बोलेगा कि मशीन तो काम नहीं करता. मशीन काम नहीं करता क्योंकि वो जोड़ नहीं पाया, कहा मशीन तो जुटता ही नहीं है. वो नहीं समझेगा ज़्यादातर लोग. Many farmers will tell that this machine is not attachable to this tractors or other platforms because they don't know. So they will say, I am trying to attach, but it is not getting attached. So it is a fault of machine, not the man. They will not take the fault. So that kind of things is required. Now, another point, power availability. In that also, Dr. Mehta was present in that. All you are power man, for machinery and I am processing basically. And when we talk about power availability, everyone knows power availability means electricity, diesel, or petrol power availability. But your power availability here means powered by the human also, powered by the animal also. We need a data, separate data. Actually, even parliament committee on agriculture also stand on the power मतलब बिजली समझा.
बाद में उसको हमने बहुत कोशिश किया समझाने का, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन उन्होंने समझा नहीं, अंत में छोड़ यार छोड़ो खत्म हो, because that is the highest level of the committee. So what is the power availability means actual power, electricity, diesel engine, maybe our petrol engines, whatever you are, not human power, not animal power. ये डेटा हमें चाहिए, उसका ट्रेंड क्या हो रहा है. That actually is the important power availability. If throughout the world it is being changed, it is being utilized, we should change it. We should change it. India is becoming the peaceful, maybe in 25 years. So we should be showing to the world that this is not the power availability. We have calculation, this is the way of calculation. I am sure, friends, people will follow us in a few years only. Similarly, I am telling that most of the time, Dr. Mehta knows, many of you also met him, हमेशा हम डरजली की बात करते हैं, डराने की बात करते हैं. Always, this is डरजली, इसमें इतना डरजली, हम डरजली कम करने की बात करते हैं. We should always talk about the improvement of the comfort level. That may be the reverse of डरजली, but talking always positive is a very good. So this machinery is 90% comfortable than that machinery. That machinery is 80% less comfortable than that machinery. It gives more and more positive impact to the users. Instead of you are telling that ये इसमें डरजली कम है, मतलब डरजली तो है ना? So I request all the pharmacy power men, don't use since now. Today take a resolution, don't use drudgery, use only comfort index, calculate a formula. I have been told that there is a formula, but that formula is very primitive level. I had talking with Dr. Agrawal and his AICRP on everyone on this. Comfort will take many other things, physical things also. Comfort means जब आप धूप में जाते हो बिना कुछ मशीनरी यूज करने के लिए, क्या कहते हैं, पटलिंग करने के लिए जब जाते हैं तो हमें माने कीचड़ लगता है, पानी लगता है. That also can be uncomfortable. Nowadays you guys don't want to go, so that thing should also come in comfortable index. How farming is comfortable. So have a brainstorming on all those. And I can tell that I can help because I am master in development of many type of index, measuring this 0 to 100%. So I can help you, but you people have to sit together and give a new index, comfort index, compile ergonomically, then human minds, then environment, then come the pharmacy. पहले तो वो होना चाहिए एग्रीकल्चर कंफर्ट इंडेक्स कितना है किस में. So what composite comfort index should come, and we should forget about drudgery. Means drudgery कम कर दिया मतलब फिर भी drudgery है, क्यों मैं जाऊँ drudgery में. मुझे तो बोलना चाहिए इतना ज़्यादा सुखदायक है, 30% सुखदायक है, it is not comfortable. Another important task I have already taken in the hands. You might be knowing, maybe Odisha may not be that effective. But for southern India, particularly Punjab, Haryana, Western UP, Delhi, in winter, डॉक्टर साहब हैं बैठे हुए, जो पैडी पराली जलाने का धंधा जो होता है, and that धंधा जो है वो मजबूरी है. That is the मजबूरी of the farmers. They have no way, and many times we say that is because of the variety we have developed, because of the machinery we have developed. You see, I say that is the result of the research which we have done. Otherwise, वो problem नहीं होता. Research because we develop the short variety, short duration variety. So they get the window, few months window, maybe 4 weeks or 3 window, and they try to sow the wheat. Earlier, wheat were not being done usually in paddy fields. So we developed the short variety. उस बीच में उसको 1 महीना का विंडो मिल रहा है तो चाहता है उसको भी यूज करना. पैडी फील्ड में पहले व्हीट नहीं होता था,
क्योंकि वो ड्यूरेशन उसको नहीं मिलता था. पैडी हार्वेस्टिंग was December mostly, December, November in December. I am the farmer's son. Most of the time I have used, I have gone to. So December was the peak period and December was the last time of the sowing of the wheat. So पहले wheat में लोग खेसारी करते थे या pulse crop करते थे, not the wheat. But our breeders, our scientists have developed a short duration variety. So that harvesting was pre-pondered. So they want to utilize that medium. It is not their fault. It is fault of the short variety. Then come to the engineers. Engineers develop the combined harvester. And the combined harvester harvests those crops at the height, not from the bottom as the haswa jo katta hai aaj. So it is a fault, it is happening because of the fault of, you can say the variety, fault of the machine. So as a chairman of BIS, I have told the BIS to develop a standard for combined harvester and give the allowance of cutting as minimum as possible. But again the manufacturer will cry for that. So friends, take a combined project, particularly PAU, and who are best in combined harvester design, that how to lower down. जितना नजदीक से कट करेगा पराली जलाने का प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगा धीरे धीरे. माने जो स्टेबल बर्निंग का पराली तो तब भी रहेगा, बट देयर आर मेनी अदर, बट स्टेबल तो कोई लेगा नहीं, परचेज भी नहीं करेगा. तो one objective of this scheme to redesign the cutting parts of this combined harvester to the level of hand cutting of the. I know the problems. I have discussed with some manufacturer also, but engineers can give the solution of any problem, that I believe, and that is not impossible. Another very good development, mat type, Dr. Mehta said, but now we are propagating DSR. Many times we say DSR. So mat type or paddy transplantation versus DSR, which is better? And how much? Economically, environmentally, and other things. That people will ask us because both are our technology. And we claim that we have given a machine, so DSR is becoming more and more popular. So have an analysis, and I may be asked anytime, आप किसको ज़्यादा recommend करते हैं? So we should have an analysis on that. Much things have been told on export. Many times I have been in the council, and our previous honorable DG was quoting many times that Basmati 11 is, yeah, 11 it is being by around 3,000 million rupees something exported every year. It is the highest export single item from the country. In agriculture, I will tell you. And that was giving in mind that what about engineering item? Earlier it was not known. I will tell you our one single machine, cotton ginning machine, around 300 crore every year being exported, designed by the seed cotton. And many of you may be knowing or not, India is the next net exporter of the farm machinery and implements from many other countries. And last 10 months, India has exported it to around 147 countries. Our farm machinery and equipment. Do you know who is the largest importer of our machinery? आपको पता होगा जो इसमें इन्वॉल्व है, but you will be surprised. It is America. Then European countries, that is Italy, also exporting. I have written many. And last, I will tell you that net exporter means वो भी थोड़ा बहुत नहीं है, just किसी तरह हम सब पास किया है. Among the export in 2019-20, it was 124 million US dollar, and we are in a profit of $708 million. मैंने $700 million का मैं ज़्यादा एक्सपोर्ट किया हूँ
जितना हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं कुछ फार्म मशीनरी इक्विपमेंट, बट 700 मिलियन टन का इंडिया इज एक्सपोर्टिंग मोर. सो यू शुड हाईलाइट ऑल्सो. आजकल का जमाना है, बहुत अच्छा वर्कर हैं आप, बट इफ यू आर नॉट स्पीकिंग, इफ यू आर नॉट राइटिंग, इफ यू आर नॉट beating the drum, no one will come. Friends, your achievement may be taken by others, and they will run from your back. So you have to tell the people that this is the status and this is our contribution. And then it will be very, very good. Germany is also doing FLD adoption. FLD, we see, by training and demonstration we are doing, it is giving the benefit. But I want that, what is the effect of adoption rate of this FLD which you are doing in this scheme? That data, effect of FLD on adoption of particular technology, maybe of your center. Have an evaluation, a study evaluation, and otherwise go on doing 100,000, 2,000 crores, क्या हुआ? कोई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपने 50 कर लिया से क्या हुआ? क्या फायदा है? So we should have that. And there should be a marriage between the ergonomic scheme and farm machinery. For ergonomic scheme, I have already told, they should not design machinery, they should come with the standards, they should come with the theory of ergonomics, that is comfort level for particular farm machinery, and those should be implemented in design and development of farm machinery, equipment and machinery in this scheme. So they should work together. And paper, so 95 is very less, I think. By simple and simple, from next year, we will link the paper and commercialization of technology the fund will leave next year, means April 2003 to 2004. And I will see personally. Earlier on the earlier PC was independent to distribute the funds, but now I am thinking that it should go through the SND. जो किसको कितना दे रहे हैं, अपने मित्र को कितना दे रहे हैं, अपने दुश्मन को कितना दे रहे हैं, PC are very close. So maybe some very good center, very good friends, maybe very good बात नहीं मानता तो उसको कम फंड दो. But we are going to link proportionately. May not be true with Dr. Mehta, but may be true somewhere others. I do not know. It is a human weakness. So with the paper written, technology commercialized and adoption rate, which I have spoken, this will drive the proportion of the release of the fund. Because these things are technology transfer 22. Transfer करते हैं उससे क्या हुआ? बच्चे को तो हमने जन्म दे दिया, बच्चे को स्कूल में दे दिया, लेकिन बच्चा स्कूल जाता भी है या नहीं? Whether you are seeing or not. आपने स्कूल भेज दिया, सोचा बच्चा को स्कूल भेज दिया, पढ़ाई करके आता है, लेकिन भर दिन वो स्कूल जाता भी है, रास्ते में कहीं कंचा खेल रहा है. I was doing that in high school, in school. I visited my parents for around 2 years. I was being sent to my primary school, लेकिन 2 साल तक मैं स्कूल नहीं गया. और दूसरे साल में मुझे मेरा चाचा ने कहीं कंचा खेलते देख लिया, और that was the turning point. I was हमारे यहाँ खलिहान में मेस में क्या बोलते हैं, बाइक को चलाने के लिए खूंटा काटते थे. And then I was, मेरे पिता भी काफी अच्छा हुए थे. जो अभी तक तो इसने स्कूल गया ही नहीं, कुछ नहीं किया इसने. So that should not happen with your technology. You have released, you have licensed, and I have seen that after licensing, even many people giving you 1 lakh rupees, 2 lakh rupees, they are not commercialized. So that is not commercialized. So take care of your baby. Because you have given the birth, you have sent the primary school, it should go to high school. High school means I say that they are started manufacturing. But after manufacturing, whether they are able to sell, help them. Because it is once it is sold by many people, sold to many people, means your child, your technology have been graduated. Then you can take some breath for other technology. Last and important point, मैं करता हूँ, किसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, and all the scientists, तो अभी जो आप मशीनरी, whatever machinery technology implement you are making, forget all
I want to see each and every project, and most of the projects should be stopped henceforth today, because 1 year I have given time. Last year भी मैंने वो बात बोला था, बहुत सारे projects should be closed which are not having sensor and automation component in that. Simply pharmacy खटखट इतना आवाज करता है, वो मशीन हमें नहीं चाहिए. जो हमारा agricultural machinery है, that machinery should be world class, means world class, looking beautifully, handsome, whatever you are used. There should be no sound. There should be 100% comfort index using automation and sensor technology. This project में नहीं है, that project will be stopped from this workshop. Whether it has been done 1 year or 2 years, for that, friends, I have told you that read. You are the engineer. You can read anything. You can understand anything. You can implement anything. All those things have been not taught in BTech, MTech, PhD. I have also not been taught BTech, MTech, PhD, but worked 20 years on sensor only. I wrote a book, which books are being sold throughout the world, not India much. But if I can do, you can also do it, because you are of the equal level. So पढ़ाई के लिए पढ़ना है, and I request the PC to ask each and research engineers, PM, center, who has read how many books in every month. हमें every month report चाहिए. आपका center जो है FIM का, कौन आदमी क्या किताब पढ़ा, reference और कितना पेज, क्या समझा. I need it in writing that report, because I want to now force. 1 year has gone. If someone of you have done good, very good, then our scheme will run in automation and sensor technology. I want to change this scheme for implement machinery automation and sensor technology scheme in few years. So उसके लिए actually automation engineer होना चाहिए. So that is the last. And horticulture mechanization required priority. Horticulture mechanization, थोड़ा tradition से हट के horticulture, particularly harvesting is important in horticulture. That required attention. Cotton harvesting, already our start project in council level, that some people are already working, that need more attention. And these are the scale which I personally want. I have only 1 year to show all the result of these, whatever I have spoken. For that, whatever I want, I will impress upon you people by all the means. Thank you very much. So much, sir, for an inspiring remarks. Success story जो आप लोगों ने रिलीज किया है, not a success story. Don't say writing just success story becomes success story. No, there is no public data. There is no input. Now, I have the honor of requesting the chief guest, Professor P.K. Rao, Honorable Vice Chancellor, Odisha University of Agriculture and Technology, to address the gathering. Respected Chairman and DG Engineering, Dr. Jha, we have with us the Director, AICRP, Bhopal, Dr. Mehta, then the ADG Farm Engineering, Dr. Singh, former ADG, Dr. KK Singh, Dean Faculty of Agricultural Engineering, Dean of Research, and many deans are also available in the audience. Dean Postgraduate Faculty, he is also an engineer. Dean Students Welfare, he is also an engineer. And lauded engineer and our Honorable Board of Management member, Professor S.N. Swain, the project coordinators. The project coordinators of other parallel projects, esteemed delegates of 37th annual workshop, my colleagues, friends, press and media, of course students are also there. Really it is a very good occasion to get united. I was remembering during the regional committee meeting chaired by DG ICR, incidentally Dr. Mehta and me, we were sitting on the same sofa in the front bench, front row, and he was talking to me that if it can be hosted here. So sir, I am extremely thankful you have
we have kept our words to each other, and you have agreed to host it here. The thanks also goes to the chairman, PDG, and my colleagues who have helped me in keeping my words. So a dream came true, and I am also extremely happy after knowing that this is for the first time. Though it is a very long project, but for the first time OUT is hosting. So thank you so much, sir. My job has become much simpler the way my colleague Dean CIT described about OUT. So my sincere thanks to him. So he introduced my university, our university, to all of you in a nutshell to the extent possible. And also, I was going through the presentation of Dr. Mehta, where he narrated how farm mechanization, in particular agriculture engineering in general, has contributed to the agricultural development of the country. Similarly, if I look back to my home situation, how the agriculture engineers are contributing here. As you see, the Dean faculty, Dean of Research, Dean Postgraduate Faculty, Dean Students Welfare, Controller of Examination, Dr. Behra is there, and also PI of most prestigious project, NAACP, Dr. Das is also here. Another World Bank funded project reward, Dr. Sahu, Bharat Sahu, he must be somewhere here. And also the BPCL chair, Dr. Mahanti, he is here. So here also, agriculture engineering has assumed as much importance as possible. So, and also, I was remembering my learnings so far agriculture engineering is concerned. Obviously, most of us are from villages. I am also from a village background. In the initial days, there was a little resistance to farm mechanization. We have seen those days because we think India is a developing country, there is poverty, and manual labor should be honored, otherwise there will be unemployment. In between, when I became a student, that too in an agricultural university, in a essay competition, I stood first because I was unique in my approach, where some of my friends have narrated they should whether go for farm mechanization, yes or no. But I had a blended approach. I might have suggested, I do not know exactly remember now, but somehow I recollect, blended approach in the sense selective mechanization, gradual mechanization. Over a period of time, we will phase out manual labor and gradually these machines will take over. And that has came. I am from coastal Odisha, where my entire district and village got devastated during super cyclone. We don't find not only human population was also affected, the worst affected was animal population. We don't find any bullock power for this cultivation or agricultural purposes in our village. Every villager is in need of farm machineries. So this has really, the dream we are thinking long back has come true with an objective of 100% farm mechanization. And also, the state is giving utmost priority to the extent possible. As our BDG was referring to, in the block level we should have an agricultural engineer, sir, it has become true in very recent past. Out of 314 blocks, 167 assistant agricultural engineers are there. The entire cadre has been restructured. Now, the engineering wing in Government of Odisha was previously headed by a deputy director. Now it is by a chief engineer, and not only one chief engineer, there are 3 chief engineers, at least seven superintendent engineers, and persons where an assistant engineer was put. Now it is headed by one executive engineer, and in one stroke of pen, 17 executive engineers. I was in that committee also. 17 executive engineer cadres were also created. So definitely the state is giving utmost importance. I would have been also still happy either Dean of Research or Dean CA because they have a very good lobby also. The engineers who are present here and my
former colleagues who have retired have come over here because of emotional attachment, professional attachment, and personal attachment. They have a good lobby. They could have also made the chief engineer headquarters available here, so that many a message would have been transmitted to the state government. Coming to the deliverables of the project, initially we are focusing on crop, climate means agroclimate, but now the domain has been still widened. Apart from crop and climate, we should also include our clients. There has been change in the level of our clients when we are focusing on individual farmers. Now there is everywhere there is a group approach. Group approach means the cultivation is taken up by SHGs, the cultivation is taken up by FPOs, and so we should think of how best we can rearrange our machinery system so that it will address the requirement of the goods. And apart from that also, though our mandate says it is design, development, testing, of course demonstration is a little silent, but we will add demonstration and entrepreneurship. Unless otherwise, of course the DDG was focusing on commercialization, we are synonymous to each other. So if entrepreneurship, or if we can rope in entrepreneurs to our mechanization or our farm machinery development system, the baby will definitely grow. It will go to school, college, graduated, postgraduated, PhD, as our DDG is expecting. And please bring in such kind of efforts to our project activities so that all our technologies are commercialized and in a entrepreneurship mode. In my earlier assignment as Managing Director of State-Owned Agricultural Promotion and Investment Corporation of Odisha Limited, initially subsidies were given to farmers, as we say also entrepreneurs, for purchase of machineries to the tune of 50%, limited to 50 lakhs. We revised it to the tune of 50%, limited to 1 crore, not for purchase of equipment, but for manufacturing of equipment. So such entrepreneurs may be scouted, who are mobilized, motivated towards our design and prototype, and they may be also tagged with APICRP, so that they will be able to establish such units and to take our baby to school, college or university as we think of. Besides, sometimes we have to have a broader vision, not only see the high-ranking entrepreneurs, but also to people who still need our help. As DDG was referring to drudgery, and now we have come out of drudgery seeing comfort, but I am aspiring for the days when farm mechanization and the person handling a farm machinery will consider himself as a luxury. So I remember the days when, being an assistant professor, I availed one SC ambassador car, and that was under a foreign funded project, and that was also objected by the audit that an assistant professor cannot avail a SC ambassador car. So he could have gone ordinary with a non-AC car. But now the situation has changed. There cannot be car in the Bhubaneswar market without AC. There cannot be auditorium in the university without AC. So it is a right time we need to come out of a drudgery, discussion on a drudgery, come to a level of comfort, but see the luxury. The person who runs a machine should feel himself that he is respected, he is dignified, and it is his privilege to run this machine. So definitely the future days are of agricultural engineers. All our best wishes, and to the extent possible in the university framework we will try to support. You will be feeling happy. There are many auditoriums in the university setup, and all our workshop seminars are held at the university main building. But your engineers are so much self-sufficient, they thought let it be done here, including their food and other logistics arrangements. So take all our good wishes for that, and hopefully we will be able to deliver
up to the expectation of Odisha in the state of Odisha from the university side and that of ICR in the national context. Good luck. Thank you. For your kind words, you are the real source of inspiration behind all the activities of our university. I now request Honorable Vice Chancellor OAT to present a memento to Dr. S.N. Jha, DDG, Agricultural Engineering, ICR. On behalf of the university. I K.K. Singh, Distinguished Expert and former Assistant Director General, Farm Engineering, on behalf of the university. Again I once again request our Honorable Vice Chancellor to present a memento to Dr. C.R. Mehta, Director, ICR, CIE Bhopal and Project Coordinator, All India Coordinated Research Project on Farm Implements Machinery. I now request Professor S.K. Das, Dean, College of Agricultural Engineering and Technology, to present a memento to Professor P.K. Rao, Honorable Vice Chancellor, Odisha University of Agriculture and Technology, on behalf of the college. I now request Dr. P.L. Pradhan, PI, AICRP on Farm Implements and Machinery, to propose a formal vote of thanks. Thanks on this memorable occasion. At the outset, I would like to thank our chief guest, Professor Prahat Kumar Rao, Honorable Vice Chancellor OUT, for his gracious presence and his encouraging words in today's function. I am also thankful to him on behalf of the FIM project for his kind consent to organize this workshop in this glorious institute. We are grateful to respected Dr. S.N. Jha, DDG Engineering ICR, for his august presence here. He has always been a leader and a motivator for the agricultural engineering fraternity of this country. His words of encouragement and able guidance have always motivated us to excel in our field of work. On behalf of this institute and on my personal behalf, I thank you, sir, for giving necessary approval to host this workshop in our university. I would like to thank Dr. Kanchan Kumar Singh, former DDG Engineering and distinguished expert in the field of farm machinery and power management, for his valuable words. His fellow feeling and love for this profession have always guided us to do better in our professional life. I sincerely thank Dr. P.L. Singh, DDG Engineering, for his guidance and continued support. I thank you, sir, for your kind presence in this august gathering. My heartfelt thanks to Dr. C.R. Mehta, Director CIE Bhopal and Project Coordinator of AICRP on Farm Implements and Machinery, who initially proposed to organize this workshop here and gave us the opportunity to host this event in OUT Bhubaneswar. His constant support at all stages will always be cherished by us. I thank our Dean of Research, Dr. S.K. Spine, who have always encouraged and guided us to make this event successful. I sincerely thank our dynamic Dean, College of Agricultural Engineering and Technology, Dr. S.K. Das, for his untiring effort to provide all logistic support to make this event successful and a memorable one. I would like to thank Dr. S. Pine, former Dean of this college, and Dr. S.K. Nanda, former PI of this FIM project, for their valuable presence here today. My heartfelt thanks to our distinguished invitees, the PIs and co-PIs of the FIM centers from all parts of the country, starting from Punjab to Tamil Nadu and from Gujarat to Assam, for their valuable presence. I hope you will love your stay in Bhubaneswar during these 3 days. I would like to express my thanks to our manufacturer friends for their valuable presence. I sincerely thank all deans, directors, project coordinators and esteemed faculty members, students for their cooperation and help to make this workshop successful. I thank all the representatives of press and media who are present over here to cover this event. At last, I once again thank one and all who are present over here for your valuable presence. Thank you. Of you a pleasant and memorable day ahead and wish the event a grand success. On behalf of the organizers, I request all the esteemed guests and delegates to kindly join us for tea in the front lawn of the college.
Thank you. Again. With the agricultural machinery industry for public-private partnership in research and development and transport technology. First of all, I will request all our manufacturer friends, please introduce themselves. Good afternoon to all of you. आमे वर्तमान मैन्युफैक्चरर्स मीटर में करबा हमर जेतबेले ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन फार्म इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी होची सो ये प्रोजेक्ट अंडर रे गुडा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज मध्ये रहउचंती आपन संगे किसी मध्ये गुडा डेवलपमेंट करउचंती तेनको जेतबेले हमर एसटीएफ गेस सो डीडीजी एडीटीज प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स एंड डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री समस्त आपके अछंती तेनको आमे माने प्रथमे जानिया चाहेबु आपन माने को टाइप रो काम करउचंती और आम संगे को हिसाब से जड़ित अछंती और आम द्वारा केमती आपन म्यूचुअल बेनिफिट रखि पाइ परछन नै सो वी लाइक टू हैव योर इंट्रोडक्शन then maybe a little brief about your activities then the type of collaboration that you are having with OUAT and the type of mutual benefits that we have gained from each other so microphone का भी अच्छी हां सर प्लीज ओडिया हिंदी इंग्लिश हैप्पी चलता है मिक्स टाइम पे बोलते हैं मिक्स टाइम पे सबको मेरा नमस्कार मैं बलागीर डिस्ट्रिक्ट सोमलेश्वरी इंजीनियरिंग वर्क्स नाम से हमारे 2009 से शुरू किए और 2010 से हम यूटी से लीकेज है हमारा एक बुलेट्रॉन बॉटम रीजर जो मल्टीपर्पस बुलेट्रॉन रीजर मल्टीपर्पस ओनली बटन हम पहले यहाँ लाए थे टेस्टिंग के लिए तो गवर्नमेंट टेस्टिंग हो गया इसके बाद फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा सब्सिडी भी अप्रूवल हुआ अभी भी बहुत सारा फार्मर्स को यूज कर रहे हैं उसके बाद हमारा रोटावेटर पेडी थ्रेशर और सेलर पेडी सेलर ये भी हम यहाँ को यूनिटी में हम पहले कल्टीवेटर एमबी प्लाउ और पेडी थ्रेशर रोटावेटर ये सब यहाँ टेस्टिंग किए थे सेलर तो अभी किसी में किए हैं तो ये इसी हिसाब से हमारा लिंकेज है अभी भी गवर्नमेंट सब्सिडी में अप्रूव है हमारा सोमलेश्वरी इंजीनियरिंग वर्क्स और आगे कुछ इंप्लीमेंट्स है जो छोटा इंप्लीमेंट्स है हम अभी नहीं दिए यहाँ करेंगे इसी हिसाब से हमारे लिए फोकस करता है बाकी इंप्लीमेंट अभी तक नहीं किए OUAT से 2013 से हम जुड़े हैं पेडी थ्रेशर ग्राउंडनट थ्रेशर मल्टी क्रॉप थ्रेशर सब टेस्टिंग किए हैं और हर प्रोग्राम में भी हम अटेंड करते हैं ट्रेनिंग हो गया कुछ इम्प्लीमेंट दिखाने के लिए भी वो 4 लोग दिखाते हैं टेक्निकली बताते भी हैं और OUAT से ऐसा एक प्रोग्राम करिए मैन्युफैक्चर लोग को मतलब उत्साहित करने के लिए कुछ करिए ये मेरा उत्साहित मतलब ट्रेनिंग जैसा
नया नया टेक्निक के लिए इंस्पायर करें। मैं इतना बोलते आपण माने जदि कोनसी टाइप ऑफ सपोर्ट ओइट पाए को चाहउछंती किंतु कोनसी कारण पाई पर नांती मते कोंतु बिकॉज़ एक्चुअली ऑल द नेशनल लेवल लीडर्स आर हियर दे कैन हेल्प यू। नमस्कार, प्रणय कुमार प्रसाद फ्रॉम प्रगति इंजीनियरिंग कटक। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और पोस्ट हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंट्स, पोस्ट हार्वेस्टिंग मशीनरी, एक्सेल ग्रोथ प्रेशर, रोटावेटर और एमडी प्लाव, डिस्क प्लाव, कल्टीवेटर, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और पोस्ट हार्वेस्ट में दाल मिल, ऑयल मिल, आपका राइस मिल, चक्की, ये सब बनाते हैं कटक में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कभी कोई जरूरत पड़े तो हम यूनिवर्सिटी का सलाह भी लेते हैं। ये लोग जाके हमको टेक्नोलॉजी में सलाह देते हैं क्या क्या करना है। हमारा गोयल सर पहले थे, कभी जरूरत रहते हैं, साइंस सर है, सारे जाके हमको हेल्प करते हैं। जितने सारे रिपोर्ट हमने निकाले हैं सारे यूनिवर्सिटी से ही निकाले हैं, तो सब्सिडी में अभी चलता है। सारे उड़ीसा के जो किसान लोग लेते हैं सब यहीं से लिए हैं रिपोर्ट, बहुत सारे हेल्प मिलता है यूनिवर्सिटी से हमको। Good afternoon to all. Good afternoon to all. मेरा नाम बिट्टू नायक है। मैं वर्धमान एजेंसी रायपुर का प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। और इसमें जो स्पेशली हम लोग को थ्रेशर ही बनाते हैं और बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम लोग OUT से खास करके सीखे हैं। और इन द पीरियड ऑफ गोयल सर हो गए, प्रधान सर हो गए, अपना देवराज सर हो गए, इन लोग से बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख के उसी में स्पेशली हमारी मैकेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद और जो रिजल्ट हम लोग को उड़ीसा क्या रेस्ट ऑफ इंडिया में भी हम लोग काम कर रहे हैं, खास करके उड़ीसा में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके वजह से मोस्ट ऑफ ईयर्स हम लोग नंबर 1 पोजीशन पे बरकरार है। और स्पेशली मैं थैंक्स कहूँगा OUT डिपार्टमेंट को, और इन्होंने जो हम लोग को मतलब सहायता किया, ये वाकई काबिल के तारीफ। थैंक्स। Grateful to all the faculty members जो यहाँ पर है, they immensely helped me in our growth and development of my faculty. And because हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं नाम से डेवलपमेंट नहीं करें, वो लोग इवन इंप्लीमेंट अराउंड 10-15 यूनिट्स पॉपुलर डिफरेंट मैकेनाइजेशन से प्रोडक्ट हम R&D के साथ PhD प्रोडक्ट के साथ आइडिया देते हैं, हम वहाँ पर बनाते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर वो डेवलप करते हैं, इसलिए वो मार्केट में मिलाते हैं। एंड ये ग्रेटफुल फॉर दिस एसोसिएशन एंड वी आर वेरी इमेंस बिकॉज लास्ट प्रोडक्ट हम जो डेवलप हुआ था वो रैंकिंग के सेकंड पर गया एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस मार्केटिंग बहुत अच्छा हुआ है। और पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट सीडी भी आ रहा है, वो भी डेवलपमेंट चल रहा है। और रैंकिंग का पाकिस्तान फंड बेसिकली है पाइपलाइन में, बुलेट में इंप्लीमेंट भी है। अब बुलेट में रोटी और बुलेट पानी की वैसे बहुत सारे और रैंकिंग का और एक तरफ पीपीटी प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होता है वो कैसे, और देखिए हम मशीन बनाते हैं, आप पहले लेके बनाते हैं, बट एट लास्ट वो OUT प्रोडक्ट होता है।
योगदान का कुछ समय से अगर ग्रेट हो, हम इससे कुछ ये नहीं करना, हम मॉडल बनाते हैं, बट अब पूरा जो यूनिटी का जो रहता है उसे हमारा पीपीटी मॉडल होने से तो विजुअल से रिकॉर्ड डे नाइट बहुत अच्छे करते हैं, ज़्यादा लिखे प्रोजेक्ट है, टोटल मैंने में जो खर्चा उनसे में तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, because I am from childhood I am into development, apartment, सोनाई शहर से लेकर आज तक 5,000 रुपये तक बनाए थे, सीट ये बेच रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे 20-30% हम बनाए हैं, जो मार्केट में कुछ आता है, नहीं आता है, कुछ एक्सेप्ट होता है, नहीं होता है, और हम पूरा भी है, अभी हम डेवलप किए गोल सर्विस हम लोग पोस्टल सर्विस डेवलप हुआ है, और आपका अभी वो पावर डेवलप हुआ है, बहुत से डेवलप हुआ है, तो ये बिल्कुल कुछ स्थिति होने को तो अगर प्राइवेट जो मिलते हैं उनका भी कुछ सपोर्ट हो, कुछ उनका नाम भी हो, अभी तो है वो तो अगर गुरु का काम नहीं होता, आप तो गुरु है, गुरु का ना आगे नहीं होते। ये बात समझ गया, एग्रीमेंट है और आगे और क्या चाहते हैं? ये तो आपका आशीर्वाद है, आगे कैसे ये बढ़े ये हमारा आशीर्वाद। और अगर एक्सपोजर भी होता है बाहर तो एक्सपोजर के हमें भी कुछ कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं। एक्सपोजर के अगर आउटसाइड कंट्री में बहुत सारे मशीन हैं जो हम एक्सपोजर होने से हम भी उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मैं सुखदेव दास हूँ, मेरे साथ हमारे मैं इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड सोनालिका से हूँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे साथ हमारा अंकित वर्मा जी हैं और हमारा आकाश स्वाई जी हैं। मैं कस्टमर का सर्विस देखता हूँ और मार्केटिंग और हमारा जो सेल देखते हैं। सोनालिका जो है 1969 से ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं किया था, वो 1960 से पहले हमारा थ्रेशर मैन्युफैक्चरिंग किया था। उस टाइम एक हरित क्रांति का जो गेहूं का आया था फसल, उसका नाम था सोनालिका, तो उसी के नाम पे 1997 में हमारा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उसका नाम हुआ सोनालिका। तो अभी 1979 से आज तक वो फार्मर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसके साथ कॉम्बाइन हार्वेस्टर भी कर रहे हैं। और हमारा जो ट्रैक्टर है वो 20 HP से 120 HP तक मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं और 6 सीरीज से कर रहे हैं। एक है हमारा DI सीरीज, एक है गार्डन ट्रैक सीरीज, एक है वर्ल्ड ट्रैक सीरीज, एक है GT हमारा सिकंदर सीरीज, एक है डिलक्स सीरीज और एक अभी जो आया है यूरोप कंट्री से वो टेक्नोलॉजी लेके फार्म इंडिया के मार्केट में कैसे कम रेट में और अच्छा फीचर दे सकते हैं, इसलिए टाइगर सीरीज अभी नया मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। scientific communication for from the scientific community you can spell out some expectations. Okay सर, तो मैं दे रहा हूँ अंकित जी को, वो एक्चुअली हमारा मार्केटिंग का वो ये करेंगे। एक्चुअली सर हम लोग अभी फील्ड में डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स के साथ में ट्रायल करते हैं, जैसे आप वेस्टर्न में देखेंगे तो वेलर एप्लीकेशन भी स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग जो है लोकल जो इम्प्लीमेंट्स की नीड है एज पर मार्केट, उसके साथ में चाहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए हम लोग देखते हैं बीच बीच में जब अपना टीम के साथ में फील्ड सर्वे करते हैं क्या लोगों की नीड्स है। तो ये चीजें हैं और हम भी चाहते हैं कि फ्यूचर अगर कुछ प्रोजेक्ट हमारा ओईटी से चलता है तो साथ में हम भी आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं। और छोटे छोटे जो इम्प्लीमेंट्स हमको जैसे एग्रो डिसीज का है तो उसके भी ट्रायल्स चलाते हैं और फीडबैक सबमिट करते हैं। तो सोनालिका तो सर क्या है सेंट्रलाइज कंपनी है, तो सारा कुछ जो है अपना वर्ष मैनेज होता है एक्टर से, तो लोकल में जो डिमांड्स होती हैं उसको ग्रुप में इलेक्ट करते हैं। और वैसे देखा जाए सर तो आज की डेट में उड़ीसा मार्केट जो है फॉर्मल ड्राइव सीरीज का दिया जाता है, अपर ड्रीम को लेकर के देखते हैं वेस्ट उड़ीसा में। तो हम लोग भी जो है फॉर्मल ड्राइव के साथ में रोटावेटर हिजल के साथ में लोग को जो है सप्लाई करते हैं सर। थैंक यू सर। जो है और मल्चर वो अगर ट्रैक्टर के साथ इंप्लीमेंट हो जाए कुछ अच्छा हो जाए तो मतलब वो जाने के लिए नहीं पड़ेगा। मैं अविनाश स्वाई हूँ सर। मैं 2000 हिसाब से जो आया हूँ उससे पहले मुझे बहुत गर्व फील होता है कि मैं इस कॉलेज के अलुमनी हूँ। तो मैं अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड स्वराज डिवीजन के फार्म मशीनरी डिवीजन को स्टेट के हेड
लीड करता हूँ। अभी हम फार्म मशीनरी डिवीजन के स्वराज के जो प्रोडक्ट्स हैं, राइट फ्रॉम आपका कल्टीवेटर से लेके कंबाइन हार्वेस्टर तक हम पहुँचाते हैं लोगों के पास में। OUT से मैं 2011 से जुड़ा हूँ, तो सारे तो मेरे सालों की हैं जो हमको सिखाए हैं। अपार्ट फ्रॉम गिविंग क्वालिटी एजुकेशन, ये मैं थोड़ा एक्सपेक्ट करना सर कि अभी जो हम अपने जो कस्टमर्स हैं, जो फार्मर को हम समझाते हैं फील्ड में टू परचेज प्रिसिशन इम्प्लीमेंट्स और जो हाई वैल्यू इम्प्लीमेंट्स, उसमें गवर्नमेंट को सब्सिडी दे देती है, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए, यूज करने के लिए जैसा हम केवीके के साथ मिलकर भी 2-3 बार ऐसे डेमो एक्टिविटी किए हुए हैं, तो उसमें लोगों का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अगर OUT कुछ उसमें काम कर सके इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, कि जो हाई वैल्यू इम्प्लीमेंट्स है जैसे पोटैटो प्लांटर हो गया, आपका बेलर हो गया, जिसको अवेयरनेस नहीं है और सब्सिडी है भी तो लोग परचेस करने के लिए उसमें इतना अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस जनरेट करने के लिए अगर कुछ उससे काम हो सके तो आगे के लिए और अच्छा होगा। Good afternoon to all. सर, मेरा कंपनी ट्राइबलाइट प्राइवेट लिमिटेड है। मैं बेसिकली पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो 2019 से OUT के साथ जुड़ा हुआ था, जो कि वैल्यू एडिशन के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे थे, जैसे कि मिलेट हो गया, मशरूम हो गया। तो वैल्यू एडिशन होने से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाएगा। सो जो छोटा फार्मर है, छोटा मशीन उनको चाहिए जो कि वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए। सो ड्यूरिंग कोविड, जस्ट मैं नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट NRI में इंक्यूबेटिव बना। ICRP से मुझे 25 लाख का भी ग्रांट मिला। सो करंटली सर आई एम वर्किंग विद OASMB, ओडिशा एग्रीकल्चर स्टेट मार्केटिंग बोर्ड, जहाँ पे इंटीग्रेटेड पैक हाउस डेवलप करने के लिए दिया गया है। ये पोस्ट हार्वेस्ट के बाद सर कैसे प्रोडक्ट को स्टोर किया जाए, इसके ऊपर सर अगर हम करेंगे तो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर हो सकता है, क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं कि फार्मर लोग आफ्टर बनाने के बाद उसको कैसे स्टोर करेंगे, बहुत चैलेंजेस हो जाता है सर। तो इसके ऊपर हम अभी गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो अगर हेल्प मिलता है कि OUT की तरफ से, ये की तरफ से, सर कैसे हम इंटीग्रेटेड पैक हाउस डेवलप करें, क्योंकि जो प्रोडक्ट आता है उसको प्री कूलिंग चैम्बर के अंदर जाएगा, फिर ग्रेडिंग होगा, फिर सर्टिंग होगा, फिर कूलिंग चैम्बर को जाएगा, फिर आगे जाकर उसको मार्केट सप्लाई चेन को डेवलप किया जाए। तो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट हैज क्लियरली नोटिफिकेशन टू RMC एंड वी आर गोइंग टू डेवलप दिस प्रोजेक्ट सर। थैंक यू। हेलो सर, बेसिकली से आया हूँ, मक्खन सिंह मेरा नाम है। हम लोग एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग में तो काम नहीं करते हैं, बट पोस्ट हार्वेस्ट में आते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में हम लोग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का बिजनेस है। सो फार्मर से परचेज करके देन प्रोडक्ट को हम लोग रिटेल में पुश करते हैं। हमको जो चैलेंज आता है बेसिकली ग्रेडिंग में और जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने फार्मर से परचेज किया है कोई प्रोडक्ट और बिक्री हुआ या ऐसा कोई आइटम है जो हाईली पेरिशेबल है, तो उनको अगर मान लीजिए हम लोग लेके आ रहे हैं गाड़ी में और अगर समर सीजन है तो उस टाइम पे बहुत ही प्रॉब्लम होता है उसका कि उस प्रोडक्ट को सेफली मतलब 4 से 5 घंटे के अंदर कस्टमर तक पहुंचाना होता है। तो अगर कोल्ड चेन का कुछ ऐसा जो वायबल ऑप्शन हो कि फार्मर वगैरह उसमें इन्वॉल्व भी हो सकें, और क्योंकि ऐसे सप्लायर और ऐसे मार्केटर हम लोग भी उसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, गाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो हम लोग नॉर्मल लेके आते हैं और उसको जल्दी से जल्दी 24 आवर्स के अंदर हम लोग उसको सप्लाई करते हैं। और एक ग्रेडिंग का थोड़ा प्रॉब्लम आता है, जैसे पोटैटो ऑयल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट इस बिजनेस में 50% उसी का कंजप्शन रहता है, तो उसकी ग्रेडिंग की जो मशीनें आती हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली हैं। तो अगर उसकी ग्रेडिंग की मशीनें जो हम लोग फार्मर्स को इंस्टॉल करवा सकें वहाँ से, तो उसमें भी एक हेल्प होगा। सबसे पहले तो मुझे ये खुशी है कि आज
उड़ीसा में भी OUAT में काफ़ी अच्छे नंबर में मैन्युफैक्चरर्स पार्टिसिपेट किए हैं। और उड़ीसा के बारे में मेरा इम्प्रेशन पहले ये था कि यहाँ मैकेनाइजेशन काफ़ी कम है, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन 2013 में मैंने जब प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बना तो शुरू में ही मैं उड़ीसा विजिट किया था। नंदा जी पीछे बैठे हुए हैं, उस समय PI थे। और उस समय मैंने ये देखा था कि खासतौर से कटक के आसपास कई अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे मैन्युफैक्चर है, और विशेषकर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थ्रेशर्स, जिसकी कि उड़ीसा में काफ़ी डिमांड है, जिसमें से प्रगति भी एक कंपनी है, उसको मैंने उसमें विजिट किया था। तो अच्छे मैन्युफैक्चर है, उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। दूसरा जो उसमें भी हमने देखा था, अभी पिछले कुछ सालों से इंडस्ट्री की विजिट नहीं कर पाया हूँ मैं उड़ीसा में, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है स्टेट गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट है उड़ीसा में, उस समय तो था ही। और उसकी वजह से यहाँ मैकेनाइजेशन काफ़ी इंक्रीज हुआ, खासतौर से राइस ट्रांसप्लांटर यूज होने लगे थे, कस्टमाइजिंग पर थ्रेशर्स यूज हो रहे थे, और उसके अतिरिक्त भी कंबाइंस पावर टिलर्स और ट्रैक्टर्स की यूज काफ़ी नंबर में हो रहे थे। लेकिन उसमें जो ज़्यादातर मशीनें थी वो कॉमन मशीनें थी, और वो इसलिए भी कॉमन उसमें रही होगी कि उसमें मैकेनाइजेशन उड़ीसा में इंट्रोड्यूस हुआ था, बंगाल है, उड़ीसा है। लेकिन समय के हिसाब से मेरा ये कहना है कि आप लोगों को भी अपनी कुछ प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए। आप लोग अवेयर है, उस समय हमने देखा था कि आप में से कुछ बाहर से भी मशीनें लेकर यहाँ सेल कर रहे हैं, लेकिन कुछ और मशीनें भी नई नई प्लांटर्स है, सेमी ऑटोमेटिक है, न्यूमेटिक प्लांटर्स है, और भी मशीनें हैं। आप में से कुछ ने बेलर वगैरह की बात की, वो भी शायद महिंद्रा से बात कर रहे थे। तो उस टाइप की मशीनों को भी इधर उड़ीसा में मैन्युफैक्चरिंग भी की जा सकती है, क्योंकि अभी आपकी मशीन अगर आप पंजाब या गुजरात से लेंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी काफ़ी पड़ती है। दूसरा, OUAT के साथ आप लोगों का अच्छा लिंक है, उसके लिए धन्यवाद। उस लिंक को और स्ट्रेंथन करने के लिए भी कुछ आप में से ही सुझाव थे कि अभी तो हम PPP में डेवलप करते हैं, तो उसमें दोनों को ड्यू ग्रेड रहनी चाहिए कि जो मिलकर डिजाइनर है प्लस जो डेवलपर है, दोनों को ड्यू ग्रेड रहनी चाहिए। और उसमें अगर कुछ और बात है तो हम बात करेंगे कि प्रॉपर क्रेडिट मैन्युफैक्चरर को भी मिले, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ही इम्पोर्टेंट कड़ी है जो कि आपकी हमारी टेक्नोलॉजी को आगे किसानों तक पहुंचाता है। फिर उसके लिए मैं OUAT से, हमारे साथियों से भी ये भी अनुरोध करूँगा कि वो समय समय पर मैन्युफैक्चरर के साथ मीट करें, इंटरेक्ट करें, जरूरत के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें, अगर और भी जरूरत है तो अवेयरनेस कैंप करें। और मेरा मैन्युफैक्चरर से भी अनुरोध है कि यहाँ के मैन्युफैक्चर उतने एग्रेसिव नहीं है, कुछ कटक के आसपास अच्छे मैन्युफैक्चर हैं, बाकी का मुझे ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है। तो वो भी जो अच्छे मैन्युफैक्चर है, आप पंजाब है या राजकोट है गुजरात में, उधर आप विजिट करें, देखें किस प्रकार से वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो एक्सपोर्ट में भी काफ़ी आगे है। सुबह हमारे DD साहब भी कह रहे थे कि फार्म मशीनरी के मामले में अपना कंट्री ट्रेड सरप्लस है, ट्रैक्टर 10% करीब जितना प्रोडक्शन होता है उसका एक्सपोर्ट होता है, और मशीनरी में भी काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट होती है, कुछ इम्पोर्ट भी होती है। तो इम्पोर्ट क्यों हो रही है उसका भी रीजन आप सब जानते होंगे कि क्या हो रहा है कि कई मशीनें कम कीमत पर कुछ हमारे नेबरिंग कंट्रीज से बन के मास प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट ऑफ उसकी प्रोडक्शन कम होती है, तो वो इम्पोर्ट हो रही है। यहाँ तक कि अपने इंडियन भी मैन्युफैक्चर कहीं उनसे बनवा के अपना लेबर लगा के भी बेच रहे हैं, तो वो भी हो रहा है। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, शायद उस समय मैंने कुछ देखा था कि यहाँ भी कुछ मशीनें ऐसी थी जो किसी और मैन्युफैक्चर की थी, यहाँ का लेवल भी लगा, मतलब आप बनवा रहे थे, तो उसके बजाय खुद ही बनाए। टेक्नोलॉजी के लिए आपको अगर और चाहिए तो उसके लिए हमारे साथी मदद करेंगे, जैसे POV से हमारे कलीग्स हैं, गुजरात से भी है और हम लोग भी हैं, हम आपकी मदद करेंगे। अगर आप वहाँ विजिट करना चाहें कहीं अच्छी इंडस्ट्री में, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, हो सकता है आप में से किसी ने की हो ना भी की हो, तो उसमें हम मदद कर सकते हैं। फिर उस समय उड़ीसा का मॉडल जो कि खासतौर से स्टेट गवर्नमेंट का था मैकेनाइजेशन रिलेटेड, वो काफ़ी अप्रिशिएट हो रहा था। अभी मध्य प्रदेश का तो अप्रिशिएट हो रहा है, और अभी मेरे ख्याल से उड़ीसा में अच्छा
गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा, खासतौर से मैकेनाइजेशन के लिए, जैसे सुबह वाइस चांसलर साहब भी बता रहे थे कि यहाँ एग्रीकल्चर इंजीनियर्स काफ़ी है। फिर कुछ बड़ी कंपनियां हैं जैसे सोनालिका, महिंद्रा, स्वराज, यहाँ पर तो डीलर होंगे मेनली, यहाँ के ऑफिस रीजनल ऑफिस होंगे। मेन कंपनियां का इनके हेडक्वार्टर्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। अच्छा है, लेकिन आप भी कई अच्छी नई प्रोडक्ट्स हैं, सोनालिका के पास हो या महिंद्रा स्वराज के पास है, उसको इस एरिया में भी आप लाएं। कुछ प्रोसेस मशीनरी की भी बात हो रही थी, उस फील्ड का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, हमारे डीडी साहब बैठे हैं, इसलिए कहेंगे कि मैं अगर ज़्यादा बोलूँगा तो ठीक नहीं है। तो उसमें जैसे आपकी क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, स्टोरेज वगैरह, या मार्केटिंग के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की भी बात कर रहे थे। उसमें मेरे ख्याल से आपकी जानकारी में होगा कि कोविड पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसके लिए 1 लाख करोड़ का प्रोविजन किया था। और उसमें ये है कि जो आपको प्रोसेसिंग मशीनरी है, जैसे ग्रेडिंग मशीनरी है, कोल्ड चेन है, कोल्ड स्टोरेज है, उसमें जो एंटरप्रेन्योर्स उनको लगाना चाहते हैं उनको इंटरेस्ट सब्वेंशन, मतलब इंटरेस्ट पर जो आप पैसा लेते हो उस पर इंटरेस्ट पर सब्सिडी 3% की है। आप उस स्कीम का फायदा उठाएं, जो कि मेक इन इंडिया में भी काफ़ी उसको कर रहे हैं। तो आप उसकी वेबसाइट पर जाएं, आप अप्लाई करें, आपको सब्सिडी उस पर गवर्नमेंट देगी, खासतौर से इंटरेस्ट पर। तो उस स्कीम का फायदा लें। काफ़ी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कुछ और एफर्ट किए जा रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट प्लस हमारा एक सीक्रेट लुधियाना में इंस्टीट्यूट है, इस लाइन में भी काम कर रहे हैं। कुछ सस्ते, जैसे मार्केट ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ सस्ते, मतलब उस टाइप की वैन बनाए और उसमें कुछ इस टाइप का कम कीमत पर ट्रांसपोर्ट कर सके, क्योंकि कीमत हाई है। तो यही कुछ पॉइंट हाईलाइट करना चाहता था। दूसरा मैं इस मीटिंग के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि इस ग्रुप का, जैसे OUAT का है, इस प्रोजेक्ट के थ्रू आउट द कंट्री लिंक है। तो उसमें आप हमारे OUAT के साथियों को कांटेक्ट करें, वो हमारे बाकी साथी जो दूसरे पार्ट में जैसे पंजाब है, गुजरात है, या साउथ में तमिलनाडु है, वहाँ हमारे साथियों से संपर्क कराएंगे। आपको अगर जरूरत है तो वहाँ की टेक्नोलॉजी को लाइसेंसिंग या लेने, डीलर बनने में भी मदद कर सकते हैं। तो हमारा इस प्रकार का सहयोग आपको अश्योर करते हैं। और हमारा यही पर्पज है कि हमारे देश में किसानों की कंफर्ट बढ़े। सुबह डीडी साहब ने कहा था ट्रेजरी की बात नहीं करनी है, तो मैं भी नहीं करूँगा जब तक मुझे याद रहेगा। तो कंफर्ट बढ़ानी है, तो उसके लिए अपने को अच्छी मशीनों को किसानों को पहुंचाना पड़ेगा। वो कंफर्टेबल रहेंगे तो उनका आउटपुट बढ़ेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, और अगर उनकी आमदनी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और अपनी सबकी लाइफ अच्छी रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपको कुछ और भी इनपुट्स चाहिए, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथियों से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं हिंदी में इसलिए बोला कि शायद आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है बजाय इंग्लिश के।